Good morning, students. Today we are going to read poem The Roadside Locksmith. The Roadside Locksmith. This is a very interesting poem. Okay, so I think you all are familiar with Locksmith, and you all have seen Locksmith, who is sitting in the street or on the road. Okay, so गलियों में बैठे होते हैं, रोड पर बैठे हुए होते हैं. Okay, locksmith. So first you have to know who is locksmith. So locksmith, a person who makes fits and repairs locks, जो ताले चाबी वगैरह बनाता है, repairs करता है. Okay, so that is called locksmith. So locksmith, this poem is written by Chitra Padmanabhan. Chitra Padmanabhan. So let us go giving a brief introduction of Chitra Padmanabhan. Let me see. Chitra Padmanabhan. Chitra Padmanabhan has been a journalist for 25 years and has worked with many major Indian newspapers. Okay, जो चित्रा पद्मनाभन है वो एक जर्नलिस्ट रह चुकी हैं और उन्होंने काफ़ी इंडियन न्यूज़पेपर्स के साथ वर्क किया है. She has also written extensively for children and is now associated with Pitara Kids Network. This poem is about a roadside locksmith who is sitting with his wares all spread out. Okay? He has a mountain of keys piled around him, and for anyone with a lost key or a lonely key, the locksmith has the solution. So जो locksmith होता है वो अपने जो वेयर्स होता है, ठीक है, उसके साथ वो रोड के किनारे सा ओके रोड पर बैठा हुआ होता है और उसके पास क्या होती है, पाइल्स ऑफ कीज़. ओके, पाइल्स ऑफ कीज़ होती हैं, बहुत सारे ढेर होते हैं कीज़ के, उसके साथ वो बैठा होता है. और इफ़ एनी की इज़ लॉस्ट, ओके, एनी की इज़ लॉस्ट, सो ही हैज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी वन लॉक्स. ओके, उसके पास हर ताले की चाबी होती है. Okay, so I think this is a very interesting poem. So let me see what is in the poem, but first we will do what's meaning of this chapter. Okay, so here are meaning of these words. First one is locksmith. Locksmith, a person who makes fits and repairs locks. Wares, it means things that someone is selling, especially in the street or at a market. Okay, now heaped, it means containing as much as possible. जो लॉकस्मिथ होता है उसके पास जितना ज़्यादा हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, उसके पास कीज जो होती है वो उसके पास होती है, कलेक्ट होती है. ओके, सो rusty, it means a metal object affected by rust. If a metal is affected by rust, that is called rusty. In Hindi you can say jung lagna. Okay, now despair, it means the complete loss of or absence of hope. Okay, so you can say disappointment. Okay, निराश हो जाना. Okay, so despair, it means the complete loss or absence of hope. Once again, locksmith, a person who makes fits and repairs locks, जो ताले को बनाता है, फिट करता है. Wares, things that someone is selling, especially in the street or at a market. Okay, heaped, containing as much as possible. So in this poem, heap is used for keys because locksmith has containing of keys as much as possible. Now rusty, a metal object affected by rust, and despair, the complete loss or absence of hope. Okay, so let me read our poem. What is in the poem? Okay, students, so first I'm going to read poem The Roadside Locksmith. Okay, the locksmith sits on the roadside with his wares. A tilted black umbrella blocks the sun's glare. A mountain of master keys heaped on the ground, some dull,
some old, some dusty, some gold. The locksmith has the answer to every locked door that can't be opened because the key is not there. And if you have a key that is lonely and lost, don't worry, don't fret, don't be sad, don't despair. He will find a friendly lock to complete the pair. So, students, locksmith a very important person. Just imagine if your keys keys are lost and you are not able to open the lock, and there is no locksmith, so how will you open your lock? What you will do that time? Just imagine. Okay, so अगर लॉकस्मिथ ना हो, मान लो आपकी ताले की चाबी खो जाए, आप उसे नहीं खोल पा रहे हो, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, और अगर लॉकस्मिथ ना हो तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन दैट थिंग्स. ओके, सो लॉकस्मिथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. जो लॉकस्मिथ होते हैं वो रोड साइड पर अपने वेयर्स के साथ, वेयर्स यानी जिससे वो लॉक और कीज़ को रिपेयर करते हैं, फिट करते हैं, उनके साथ बैठे रहते हैं. A tilted black umbrella blocks the sun's glare. So as you can see on your book, here is an old man who is sitting under the umbrella. Why? Because umbrella block the sun's glare. Okay, so जो लॉकस्मिथ होते हैं वो एक अम्ब्रेला को टिल्टेड करके उसके अंडर में बैठते हैं ताकि जो सन्स ग्लेयर हो, जो सूर्य की रोशनी होती है, वो उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके और वो इजी वे में अपने काम को कर सके. अ माउंटेन ऑफ मास्टर कीज हिप्ड ऑन द ग्राउंड. जो लॉकस्मिथ होते हैं उनके पास बहुत सारी कीज़ होती हैं. दे हैव अ पाइल्स ऑफ कीज़. ओके, और जो कीज़ होती हैं वो ग्राउंड पर एक जगह कलेक्ट होती हैं. ओके, एक जगह कलेक्टेड होती हैं. तो वो जो कीज़ होती हैं वो कीज़ इतनी सारी होती हैं. अ लॉकस्मिथ हैज़ अ लॉट्स ऑफ कंटेन एज मच एज लॉट्स ऑफ कंटेन ऑफ कीज़ एज मच एज. सो इट लुक्स लाइक अ माउंटेन ऑफ कीज़. तो वो कैसी दिखती हैं? कीज़ के माउंटेन की तरह दिखती हैं जो ग्राउंड पर फैली हुई होती हैं. सम डल, सम ओल्ड, सम रस्टी, सम गोल्ड. सो उनके पास जो कीज़ होती हैं उनमें से कुछ डल होती हैं, कुछ ओल्ड होती हैं, कुछ रस्टी होती है. रस्टी इट मीन्स अ थिंग इज़ अफेक्टेड बाय रस्ट. ओके, जंग लगना, कुछ में जंग लगी होती है. एंड सम गोल्ड, कुछ होते हैं जो सोने की तरह दिखते हैं. द लॉकस्मिथ हैज़ द आंसर टू एवरी लॉक्ड डोर. जो लॉकस्मिथ होते हैं उनके पास हर ताले की चाबी होती है. that can't be opened because the key is not there. Just imagine कि अगर कीज़ ना हो, ताले की चाबी ना हो, so how could you able to open the lock? आप कैसे लॉक को ओपन कर सकोगे? ओके, सो एंड इफ़ यू हैव अ की दैट इज़ लोनली एंड लॉस्ट. और अगर मान लो आपके पास कोई एक सिंगल की है या फिर कोई की लॉस्ट हो गई है, सो डोंट वरी, डोंट फ्रेट, डोंट बी सैड, डोंट डिस्पेयर. सो टेंशन मत लो, डोंट वरी अबाउट दैट. कोई चिंता की बात नहीं है. डोंट फ्रेट, होपलेस नहीं होना, हमें सैड नहीं होना, दुखी नहीं होना. वाई? बिकॉज ही विल फाइंड अ फ्रेंडली लॉक टू कंप्लीट द पेयर. क्योंकि लॉक स्मिथ एक ऐसा पर्सन है जो हर ताले की चाबी रखता है. और अगर आपकी की लॉस्ट हो जाती है या कोई की लॉनली रह जाती है तो जो लॉकस्मिथ होता है वो उस की फ्रेंडली लॉक को फाइंड आउट कर सकता है, यानी उस चाबी के ताले को खोज सकता है.
that to complete the pair. So locksmith is a person who complete the pair of lock and keys. Okay, so students, that was our poem, and it was very interesting poem. And this poem shows the importance of a locksmith in our life. Okay, so in this poem there is a locksmith who sits who sits on the roadside with his wares under the tilted black umbrella. So the tilted black umbrella blocks the sun's glare. Locksmith have a mountain of keys. They have the has lots of keys. These keys are dull, old, rusty, and cold. So, locksmith has the answer of every locked door. Okay, and sometimes when you have a lonely key and you lost your key, so don't be worried about that. Don't be fret that time, because locksmith is a single person who will find a friendly lock to complete the pair. Okay, students, so I hope you must have enjoyed with this poem.